Good morning, students. Only 20 students joined from section A. Why you are joining so much late? फर्स्ट क्लास रहता है फिर भी इतने लेट ज्वाइन करते हैं. So now I will start the second approximate method of structural analysis, that is portal method. So first of all, we will see the introduction of this method. Already I told you that this portal method, it is used for the analysis of lateral loads or horizontal loads. So that load includes wind load or earthquake load. So for that, you have to analyze the portal frame or multi-story frame using this method called as portal method. So analysis again, we're talking about the analysis means we're finding out the bending moments in beam and the columns. So first of all, we'll see the introduction part and then I will start the problem based on this method. So I think the screen is visible to all of you from both the sections. The screen is visible. If you are having any doubt or uh, then you can ask me. Okay. So multi-story building frames subjected to lateral loads are statically indeterminate frames, and exact analysis by hand calculation takes much time and effort. Using simplifying assumptions, approximate analysis of these frames yield good estimate of member forces in the frame, which can be used for checking the member sizes. So the following methods are used for the lateral load analysis of rigidly joined frames. So these two methods are used for the lateral load analysis or horizontal load. Portal method and cantilever method. Quick solution for horizontal loads includes wind or earthquake loads. And substitute frame method, it is used for the quick solution of vertical loads, includes gravity loads only. The portal method and the cantilever method yield good results only when the height of a building is approximately more than 5 times its least lateral dimension. Either classical techniques such as slope deflection or moment distribution methods or computer methods using stiffness or flexibility matrices can be used if a more exact result is desired. Okay, if you want to find out the exact results, you can go for the matrix methods of the structural analysis or the moment distribution method, and from this three methods you'll get the approximate results of the frame. Okay, so but these methods can be used for the multi-story structures. Okay, you can use it for the tall structures. So generally these methods are to be used for the good estimate of member forces in the frame. Then we'll go the first method of the, that is the portal method. This method is satisfactory for building up to 25 stories. Okay, so you can see that 25 stories means height will be very much more than that. So we can say this structure or the frame, it is a tall structure. So you can use the building
up to 25 stories. Hence is the most commonly used approximate method for analyzing tall buildings. Okay, if you want to analyze a tall building, you can go with this method. Okay, but as you know that whenever we are going to use any of the method, okay, any method of the structural analysis, there are some certain assumptions, and based on that assumptions the method is to be uh, done. Okay, so first of all we see that assumptions. What are the three assumptions in the portal method? So we'll understand that assumption, and according to that assumption we will analyze a given frame. Okay, so first assumption, ये assumptions आपको ध्यान में रखने हैं. The first assumption is that a point of contraflexures occurs at the center of each beam. Okay, you can see this figure here. Okay, here you can see this. The first assumption of this portal method is the point of contraflexure occurs at the center of each beam. Okay, so what is the meaning of this point of contraflexure? Point of contraflexures meaning, you know, so this is a point of contraflexures at the center of beam. Second assumption is that the point of contraflexure occurs at the center of each column. Point of contraflexure occurs at the center of each column. Yani, this is a point of contraflexures. So if you want to plot the bending moment diagrams of beam and column, okay, from this your bending moment diagram curve will vary from maximum to minimum. Okay, so this is a point of contraflexure occurs at the mid point of beam and the column. This is the two assumptions. Okay, and on the basis of these assumptions we will carry out the analysis of multi-story frame using this method. Okay, so whenever we will analyzing the any frame, you can see this is the first figure. This is a multi-story frame showing the point of contraflexure, and you can see there here this is a 3-story frame and 3 bay frame. Okay, you can consider the frame up to the 25 stories. Okay, and we can find out the beam moment, column shear, and column axial forces. And here you can see that this is P1, P2, and P3. These are the lateral loads. Okay, it may be wind or earthquake load, and these lateral loads are exactly acting in the at this joint. Okay, so if this type of the loading is there on the portal frame, then you can analyze it with the help of the portal method. Okay, so this frame you have to analyze as per the three assumptions. Okay, so when we will analyze the frame, you'll get understood this meaning of this first assumption and the second assumption. Then the third assumption is again very important assumption, that is the horizontal shear taken by each interior column. You can see there out of this column 4 columns are there. So these 2 columns, this column and this column, this is the interior column, and this outer one is the exterior column. So this is a again important assumption is that horizontal shear taken by each interior column is double the horizontal shear taken by each of the exterior column. These are the outer 2 columns, these are the exterior column, and this middle one, okay, these are the interior column. So जो interior column में shear developed होगा, column shear, okay, that will be double than the shear developed in the exterior column, due to which shear developed होगा इसमें due to this load, this lateral load. So you can see that here in second figure. Okay, this is a second figure where this is the top story of the frame, this is the middle story, and this is a lower story. So here they have shown the top story of the frame, and they have shown here the horizontal shear distribution in the column of the top story.
तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर लोकेट किए हैं एट द सेंटर ऑफ द कॉलम, वहां से एक सेक्शन लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे दे हैव शोन द हॉरिजॉन्टल shear. So it is denoted by this horizontal shear. It is denoted by V. So as you can see that this is the only the top story of the frame is to be considered, and from this the section is to be drawn, and the upper part of this section is to be considered, and they have shown that how this horizontal shear is distributed at each of the interior and the exterior column. So this horizontal shear you have distributed in each of the column as per the assumption number 3. So what is assumption number 3? The interior column में जो horizontal shear होगा, that is double than the shear developed in the exterior column. So if you consider the shear developed in the exterior column is V, okay, so the shear, horizontal shear or column shear developed at the interior column will be double, so it will be twice V. Okay, so you can see here in the interior column the horizontal shear is twice V, and exterior column the horizontal shear is V. Okay, and this direction you can see opposite to this P1, opposite to this P1. Okay, so if you know this lateral load will be given to you in the problem. So if you know this lateral load, okay, then first step of the analysis is you will be able to find out the column shear. Okay, so column shear, if you take the equilibrium of this frame and if you use the condition of equilibrium summation fx, you'll get the value of column shear. Okay, so you'll get the column shear in each of the story, like in upper, bottom and the middle story. So this is P1, P2 and P3. Okay, so when you consider this middle story, the horizontal shear will be again V1, twice V1, twice V1 and V1 here. तो यहाँ पे जब आप मिडल स्टोरी को सेक्शन लाइन से यहाँ पे उसका अपर पोर्शन कंसिडर करोगे, तो आपको समेशन एफेक्ट जब आप लोगे तब आपको P1 प्लस P2 दोनों लैटरल लोड ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मिडल जो स्टोरी है इसमें टॉप स्टोरी का लैटरल लोड भी ऐड होगा. व्हेन यू गो फॉर द बॉटम स्टोरी, ओके, विल हैव टू ऐड P1 प्लस P2 प्लस P3. ऐसे जैसे जैसे स्टोरी आपकी बढ़ती जाएगी अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू ऐड दैट लैटरल लोड. ओके, एंड यू विल हैव टू फाइंड आउट द कॉलम shear developed in each of the interior and the exterior column. So these three assumptions are very important while analyzing the portal method. The above assumptions convert the indeterminate multi-story frame to a determinate structures. Okay, the steps involved in the analysis of the frame are detailed below. Okay, तो ये 3 assumptions आपको ध्यान में रखना है. अभी इस assumptions का कैसे यूज करना है, how at the time of solving the problem, that we will see one by one. Okay, now here we will see the steps involved in the analysis of portal method. The first step is that the horizontal shear on each level are distributed between the columns of that floor according to assumption 3. जैसे यहाँ पे आपने ये फिगर दिखाया, जैसे ये सिर्फ टॉप स्टोरी का बताया, वैसे ही आपको मिडल और बॉटम स्टोरी जितनी भी स्टोरी है उस हर स्टोरी में आपको शेयर को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है एज पर एजम्पशन नंबर 3. ओके, इंटीरियर कॉलम में ट्वाइस रहेगा देन द एक्सटीरियर कॉलम. ठीक है, सो ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगी आपकी. ओके, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दैट शेयर in the columns of that floor according to assumption number 3. Then second step, the moment in each column is equal to the column shear multiplied by half the column height according to assumption number 2. Okay,
तो पहले सबसे पहले स्टेप होती है टू फाइंड द हॉरिजॉन्टल शेयर और कॉलम शेयर, ओके, एट ईच लेवल. सबसे पहले we'll find out the horizontal shear on the column, okay, or simply we can call it as a column shear. Second step होती है, after finding out the column shear you have to find out the column movement, okay. तो एनालिसिस अपन कर रहे हैं, मतलब we are interested to find out the column movement, beam movement and column shear and the axial forces in the column. ये अपने को पूरा फाइंड आउट करना है. So that you have to find out step by step. First we'll find out the column shear. Second we'll find out the moment at the end of the column. So that moment, or simply we can say it is a column moment, which is equal to column shear into height of the column by 2, into height of the column by 2. अभी column shear यानी ये जो horizontal shear, you can see here this column shear is V. And if you want to find out the column movement, if you want to find out the column movement, अपन column के movement निकालेंगे at the end of the column with the use of this horizontal shear. तो यहाँ पे देखो, the point of contraflexure is located at the center of the column, okay. तो जैसे मान लो कि ये height of the column, पहले top story की height 4 मीटर है, तो ये this height of जहाँ पे point of contraflexure column में लोकेट हुए हैं, तो दैट कॉलम मोमेंट और द मोमेंट एट द एंड ऑफ द कॉलम, कॉलम के एंड में मोमेंट मिलेगा, बिकॉज हियर वॉट एवर द मोमेंट्स वी आर फाइंडिंग आउट दैट इज एट द एंड ऑफ द कॉलम एंड द एंड ऑफ द बीम. सो विद द हेल्प ऑफ दिस शेयर वी हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट एट दिस एंड, ओके. सो यू हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट एट दिस एंड ऑफ दिस कॉलम. So here at this end, if suppose this is a column, okay, so you have to find out the moment at this end of the column, and this is a point of contraflexure located at the center of the column. So we'll consider this section, okay. So we'll consider this section, this portion above this section line, okay, and here this shear in this column is V, okay, and suppose this height of the column is H. So as this point of contraflexure is located at the center of the column, this height will become H by 2. This become H by 2, okay. And here you will get the moment at this end of the column due to this horizontal shear. This is H by 2, okay. So if you go in the clockwise direction, V into H by 2, इसीलिए moment at the end of the column will become column shear into height of the column divided by 2. Why divided by 2? Because the point of contraflexure located at the center of the column. So you'll get the moment at the end of the column. So as this is going in the clockwise direction, to resist this, the moment developed at the end of the column will be anti-clockwise. And same यहाँ पे anti-clockwise रहेगा, same यहाँ पे भी anti-clockwise, because this shear you can above this point and below this point you can show this horizontal shear like this. असो दे काढून टाक. So here you can see the moment developed at the end of the column will be V into H by 2. That is VH by 2, and same here. Okay. So that we will find. First of all, after finding out this column shear, we'll find out the column moment at end of the column for all the stories. That is, तो ये formula आपको ध्यान में रखना है. Column shear into height of the column by 2. Column shear into height of the column divided by 2. After second step, then you have to go for the third step. After finding out the column moment, we'll find out the girder moments. Girder moments is nothing but the
beam moment. Girder moment means beam moment. So the girder moments are determined by applying moment equilibrium equation to the joint by noting that the sum of the girder moments at any joint equals the sum of the column moments at that joint. So these calculations will consider, or this will be easily made by starting at the upper left joint and working joint by joint across to the right end. So this calculations of the beam moment we'll have to carry out in the figure, so that we will see how to find out that beam moment. After getting the beam moment, you have to find out the beam shear. Okay, so the shear in each girder is equal to its moment divided by half the girder length. Girder yani beam. Okay, this is according to assumption 1. So this is again assumption 1. Okay, assumption 1 kya hai? The point of contraflexure located at the center of beam. So beam shear जो रहेगा, that will be beam moment divided by span of beam divided by 2. So it is equal to twice m by l. तो ये एक फॉर्मूला जो है ये आपको ध्यान में रखना है. ओके, beam shear will be equal to beam moment divided by l. So इसको सिंप्लीफाई करने के बाद you'll get twice m by l. Okay, so and finally after finding out the beam shear, you have to find out the column axial forces are determined by summing up the beam shears and other axial forces at each joint. Again, how to calculate this, that we will see from left to right and from the top floor down. Okay, so all the calculations we have to make on the figure. Okay, on the पूरा फ्रेम पे ही कैलकुलेशन करना है. सिर्फ आपको ये स्टेप्स जो है वो ध्यान में रखना है. पहली स्टेप है टू फाइंड आउट दी कॉलम शेयर as per assumption 3. Second step to find out the moment at the end of the column. ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है. Column shear into h by 2 as per assumption 2. Then third, find out the beam moment. Okay, from column moment we'll find out the beam moment. Then fourth, find out the beam shear. Beam shear you'll get from the beam moment, and after that you have to find out the column axial forces. Okay, so that we will see one by one at the time of solving the problem. So here I will start the problem on this method. So here this is a problem of the portal method. Okay, I will take only one problem because there is no change in the procedure of the problem. Okay, what is the change in this? Only there will be the lateral load जो आपको यहाँ पे दिखाया है वो चेंज होगा, और यहाँ पे जो मैंने फ्रेम कंसिडर की है that is only 2 story frame. Okay, 2 story frame 3 bay 2 story frame. तो सिर्फ चेंज क्या हो सकता है, आपका एक स्टोरी बढ़ सकती है. आइदर इट मे बी 3 story frame. तो जनरली एग्जाम में हम ज्यादा मल्टी स्टोरी फ्रेम नहीं देते, आइदर 2 story और 3 story frame we are giving for the analysis. Okay, so if it is a 2 story or number of bay frame, okay, difference is not like this. difference ज्यादा नहीं रहेगा, सिर्फ आपका एक फ्लोर का कैलकुलेशन बढ़ेगा, एक फ्लोर का कैलकुलेशन आपको एक्स्ट्रा से करना पड़ेगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस मेथड, how to solve this frame, how to analyze this frame using this portal method. I have considered 2 story frame, and generally in the exam we are asking up to 2 story or maybe up to 3 story frame. Okay, so this is the problem statement. Okay, is it visible to all of you? So this is the problem statement. Analyze the frame shown in figure by portal method and plot SFD and BMD. Also calculate the axial forces in the column member. इस तरह से पूछा जाएगा, या simply it will be asked you that to analyze the frame shown in figure by portal method. Okay, तो
ऐसे भी अगर पूछा है, अगर आपको बोला भी नहीं है कि एसएफडी बीएमडी निकालो, फिर भी एनालाइज बोला, मतलब वो पूरा उसी में कवर होता है. एनालिसिस मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर एंड यू हैव टू plot SFD and BMD, and also you have to calculate the complete value of forces in the column and beam. So here you can see that this is a frame is given. This is a frame I have given for the analysis. Here you can see that there is a load of 100 kilonewton and 150 kilonewton is acting. It may be wind or earthquake load. It is not mentioned in the problem. Okay, so for this load, for this lateral load, you can see lateral means horizontal load. So for this lateral load, you have to analyze this frame. You have to analyze this frame. Okay, and this span, this different distance between this and this is given. Okay, so this is a given frame. And what is the expected calculation? You have to calculate the column movement, beam movement, column shear and beam shear, and also you have to calculate the column axial forces in each member. For both the story, you have to calculate all this value. Okay, so we'll analyze this frame as per the three assumptions. Okay, you have to go with that assumptions and accordingly you have to analyze it. Okay, so in this solution you can see, let the horizontal shear taken by exterior column be Q1 and Q2 in upper and bottom stories. Okay, upper and bottom stories. We'll consider the horizontal shear. We'll denote the horizontal shear with the help of Q1 and Q2. With the help of Q1 and Q2. Exterior column. Okay, according to the assumption. Okay, according to assumption 3. Okay, horizontal shear in interior column of upper and bottom stories are twice Q1 and twice Q2 as shown in figure. Okay, इंटीरियर कॉलम में वो डबल हो जाएगा, जैसे मैंने assumption 3 आपको बताया. ओके, सो दैट एक्सटीरियर में अपन ने Q1 एंड Q2 अपर एंड लोअर स्टोरी में एड किया. इंटीरियर में ट्वाइस Q1 एंड ट्वाइस Q2 हो जाएगा. ओके, एंड दैट इज शोन इन द फिगर बिलो, एंड दिस इज एज पर assumption number 3. So that is we have assumed and we have shown it here. Okay, we have shown it here for the upper as well as the lower story. So here you can see that first of all what you have to do, you just locate the point of contraflexure. This is our assumption number 1. First locate the point of contraflexure at the center of beam and center of column. Okay, center of beam and center of column, this is we have located for, okay, for each column and each beam member. Okay, this is as per assumption 1 and 2. Then go for the third assumption. Third assumption is that you have to find out the horizontal shear, or simply we can calculate it, we can say it is a shear resisted by column or column shear. Okay, तो यहाँ पे above this point of contraflexure, if you take this section like this, so above this point of contraflexure, okay, so here you can see that this lateral load direction is rightward. Okay, 100 kilonewton का lateral load act हो रहा है यहाँ पर, तो naturally this load is acting in the right direction, तो जो shear developed होगा column में, that will be opposite of this. Okay, so as this is rightward, this will act in the left direction. So यहाँ पे ये आपका जो कॉलम है ये एक्सटीरियर कॉलम है, इसमें अपन ने एज्यूम किया है Q1, और ये जो दो कॉलम है these are the interior column. These are the interior column, and this is again exterior column. So in the exterior column we have assumed shear is Q1. Okay, so interior column it will be double that of the exterior column, so it will become twice Q1. Okay, it will become twice Q1, and this is we have distributed along each of the column member as per the assumption number 3. As per the assumption number 3. तो जैसे ये Q1 ये है, उसके below the point of contraflexure
ओके, ये अपोजिट लेफ्ट है तो ये राइट वर्ड रहेगा, कपल ऑफ दिस. Okay, so that you have to show in this way. So you have to distribute the horizontal shear in each of the column member as per assumption number 3 for upper and for lower story. Lower story में अपन ने shear को consider किया है Q2. Okay, again this 150 is right word. तो ये Q2, twice Q2, twice Q2, ये पूरा left direction में act होगा. Okay, तो 150 किलो न्यूटन, then Q2 twice Q2, twice Q2, Q2. Again, point of contraflexure located here है, तो ये Q2 लेफ्ट में है, तो ये राइट में हो सकता, तो ये दिस विल बी द कपल. ओके, तो ऐसे आपको हर एक कॉलम में फॉर एवरी स्टोरी यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द कॉलम शेयर एज पर द assumption 3. और एक स्टोरी अगर यहाँ पे है, एक स्टोरी है, तो दैट वी विल कंसिडर एज Q3. ओके, एंड अकॉर्डिंगली अगेन we will distribute it. Okay, so this is the first step of the analysis is that first of all you show the point of contraflexure at the center of the beam and the center of the column, then distribute the horizontal shear at each of the column member for both the story as per the third assumptions. Okay, ये डायरेक्शन आपको समझ में आया होगा. Why we have considered this in the left? Because lateral load is in the राइटवर्ड डायरेक्शन. अभी ये डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद, ओके, वाई ट्वाइस वी हैव टेकन, वो भी आपको समझ में आया होगा. अभी ये होने के बाद, आफ्टर शोन ऑल दिस इन द फिगर, आवर फर्स्ट स्टेप ऑफ द एनालिसिस इज दैट we'll have to find out this shear value. Once you get this shear value, you'll be able to find out the column moment. This height कितना दिया हुआ है? This height is given here. This height is 4 meter. This height is given here 4 meter, and this is given is 6 meter. And the distance between this is given. This is 4 meter, 3 meter, and 3 meter. Okay. So this is given. So first of all, in the first step 1, we will find out the shear force resisted by column. Okay. This is the shear force resisted by column. Or simply we can call it as a column shear. We can call it as a column shear. First step जो है आपकी, find out the column shear. So how we'll get the column shear? तो पहले अपन कैलकुलेट करेंगे for upper story column. For upper story, this is your upper story. So upper story column के लिए we'll find out the value of Q1. We'll find out the value of Q1. Okay. So for upper story we'll consider the equilibrium of this, and for upper story we will find out. Okay, तो upper story मतलब portion of जो दो story है above this portion. Okay, और upper story में इतना ही portion आएगा. Okay, तो for upper story column what equation you will get? Okay, this is Q1 plus twice Q1 plus twice Q1 plus Q1. Okay, plus this is राइट वर्ड, ये माइनस है और ये प्लस हो जाएगा, तो नेचुरली दिस Q1 plus twice Q1 plus twice Q1 plus Q1 will be equal to 100. Will be equal to 100. Okay, using this summation fx is equal to 0, we'll use this equation and we'll find out the shear developed in each of the column. अभी Q1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 16.67 किलो न्यूटन. मतलब दिस वैल्यू you will get 16.67. So as exterior column में column shear you are getting is 16.67. So what about the interior column? It is twice Q1. So 2 into 16.67. Okay, so you'll get the value of Q1 after simplifying this. Then for lower story column में अभी लोअर स्टोरी कॉलम मतलब आप लोअर स्टोरी कॉलम जब आप कंसीडर करोगे या फिर आप लोअर स्टोरी जब कंसीडर करोगे, तो लोअर स्टोरी में अपर स्टोरी का जो लैटरल लोड है वो भी आएगा. अपर स्टोरी का जो लैटरल लोड है दैट आल्सो you have to consider. So what equation you will get here? Again Q2 plus twice Q2 plus twice Q2 plus Q2 will be equal to 100 plus 150. 100 plus
150, क्योंकि ये जो लोअर स्टोरी है इसमें अपर स्टोरी का भी लैटरल लोड की वैल्यू आएगी. ओके, सो 100 प्लस 150 you'll get Q2 will be equal to 41.67 किलो न्यूटन. इसके नीचे अगर एक थर्ड स्टोरी है तो थर्ड स्टोरी में Q3 की वैल्यू निकालनी है तो आपका आएगा दोनों स्टोरी प्लस थर्ड स्टोरी का लैटरल लोड, यानी एडिशन रहेगी 100 प्लस 150 प्लस अगर मान लो थर्ड स्टोरी उसका जो लोड रहेगा दैट विल बी. सो लाइकवाइज यू हैव टू कैलकुलेट इट. ओके, सो इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट कि स्टोरी अगर आपकी बढ़ रही है तो सिर्फ आपका एक कैलकुलेशन, एक फ्लोर का कैलकुलेशन बढ़ेगा. इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट. सो लाइकवाइज आपको कैलकुलेट करना है. Q1 में सिर्फ एक लैटरल लोड की एडिशन होगी, Q2 सेकेंड में 100 प्लस 150 और एक स्टोरी है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू फाइंड इट आउट. तो दिस वी हैव फाइंड आउट द कॉलम shears. दिस इज वी हैव फाइंड आउट द column shear by with the use of this lateral load. So Q1 you got is 16.667 kilonewton and Q2 you got is 41.67 kilo. Now after getting this value you have to distribute the shear as per the assumption 3. Interior में वो रहेगा double of this, that is 41.67 into 2. Then exterior में it will be 41.67 kilonewton. Understood up to this? Yes? Yes, ma'am. Okay. So I'll go to the next step. Now, the second step is that after finding out the column shear, जो मैंने आपको steps लिख के दी थी, वैसे ही step आपको follow करना है. So once you will get the column shear, okay, यहाँ पे here column shear is over, then the first step, then second we'll go for the column moment. Okay, column moment and beam moment, ये एक साथ ही अपने को कैलकुलेट करना है. column moment and beam moment and all the calculations we have to carry out in the figure. Okay, so second step is calculation of column moment and beam moment. So moment at the end of the column, अपन जो moment निकाल रहे हैं that we are calculating at the end of the columns, at the end of the column. So ये आपको ध्यान में रखना है, column shear into h by 2, height of the column divided by 2. This is as per the assumption number 2. This is as per the assumption 2 because point of contact flexure is located at the center of the column. So column shear आपको मिल गया for every top and the bottom story के column shears आपको पता है, so you'll be able to find out the column moment. So once you'll get the column moment, from this column moment we'll find out the beam moment. Okay, ये beam moment कैसे मिलेंगे आपको? From left joint to right joint and that is equilibrium जो अपन maintain करते हैं. तो वो मैं आपको बताती हूँ how it is to be calculated. Okay, just you concentrate on this. अभी इसको कैसे मैंने क्या किया? What I've done, जो पूरा फ्रेम है उसको मैंने डिवाइड कर दिया, उसको स्प्लिट कर दिया. ओके, तो हियर आई विल शो यू लाइक दिस इज अ फ्रेम. ये ऐसी फ्रेम है. ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम मेंबर्स, बीम मेंबर और जॉइन को पूरा ऐसे सेपरेट कर दिए. जैसे ये फ्रेम है तो यहाँ पे देखो, आप पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ओके, तो यहाँ पे ये जो यू कैन सी दैट दिस इज अ कॉर्नर जॉइंट, दिस इज अ कॉर्नर. तो इसको मैंने ऐसे सेपरेट कर दिया. ओके, इसको सेपरेट कर दिया. देन यहाँ पे ये बीम मेंबर है, दिस इज अ बीम मेंबर एंड दिस इज अ कॉलम मेंबर. और ओके, तो यहाँ पे ये कॉर्नर जॉइंट है, फिर यहाँ पे ये बीम मेंबर है, फिर इसको बीम मेंबर को निकाला, यू कैन सी हियर. ओके, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये टी जॉइंट है, ये टी जॉइंट है, फिर इसको यहाँ पे सेपरेट बताया. ठीक है, फिर से यहाँ पे बीम मेंबर है, ये सेकेंड बीम मेंबर, फिर यहाँ पे फिर से टी जॉइंट है, फिर से टी जॉइंट ड्रॉ किया. ओके, और फिर से ये कॉर्नर जॉइंट, ये कॉर्नर. ठीक है, अभी ये हो गया. अभी ये कॉलम मेंबर है, ये कॉलम मेंबर है. दीज आर द कॉलम. कितने कॉलम मेंबर्स है टॉप स्टोरी में?
1 2 3 4, तो दैट कॉलम मेंबर्स आई हैव ड्रॉन, दैट यहाँ पे कॉलम मेंबर्स ड्रॉ किए। ओके, मैंने सेपरेट कर दिया पूरा, बीम जॉइन एंड मेंबर पूरा सेपरेट कर दिया। ओके, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन अपने को यहीं पे करना है, इसे फिगर पे करना है। ओके, तो इसी से अपने को कॉलम मोमेंट मिलेगा और बीम मोमेंट मिलेगा, कॉलम और बीम मोमेंट मिलेगा। तो इसलिए पूरे फ्रेम को सेपरेट कर दो आप, टॉप स्टोरी और अपर स्टोरी। तो ये पहला हो गया। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है अभी ये कॉर्नर जॉइंट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्लिपिंग वाला आपको टी जॉइंट में दिखेगा, ये टी जॉइंट है। ओके, आफ्टर ड्रॉइंग दिस कॉलम मेंबर, यहाँ पे टी जॉइंट दिख रहा है, तो ये ऐसे ड्रॉ किया। फिर ये बीम मेंबर ड्रॉ किया, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस साइन मिलेगा, प्लस जॉइंट मिलेगा पूरा, तो यहाँ पे प्लस जॉइंट ड्रॉ किया। फिर से बीम मेंबर ड्रॉ किया, फिर यहाँ पे फिर से प्लस जॉइंट है। ओके, एंड देन अगेन आई हैव प्लॉट दिस बीम मेंबर सेपरेटली, एंड यहाँ पे जो जॉइंट है फिर से आपको टी जॉइंट मिलेगा, फिर से ये टी जॉइंट मिलेगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पे जैसे ये से, उसके बाद फिर से कॉलम मेंबर ड्रॉ किए फॉर सेकेंड स्टोरी। फिर से ये कॉलम, अगेन देयर आर 4 कॉलम मेंबर्स। ओके, पूरा सेपरेट कर दिया, एंड नीचे से यहाँ पे ये इस तरह से बताया। ओके, तो ये पूरा सेपरेट कर दिया जॉइंट और मेंबर को, कॉलम मेंबर, बीम मेंबर और पूरे जॉइंट को सेपरेट कर दिया। अभी इसके बाद क्या करना है, जस्ट ट्राई एंड कॉन्सेंट्रेट हियर। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे इसको अपन ने सेपरेट कर दिया। अभी ये हो गया, ये हो गई आपकी अपर स्टोरी, ये अपर स्टोरी है और ये लोअर स्टोरी। ठीक है, अभी अपर स्टोरी में पहले जो कॉलम शेयर अपन ने निकाले हैं, ओके, यू जस्ट शो दैट कॉलम शेयर हियर। तो जैसे यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन लोकेटेड है, जैसे फिगर में मैंने Q1 Q2 डिस्ट्रीब्यूट किया है, वैसे ही आपको दिखाना है, तो सिर्फ उसमें वैल्यू लिखने। तो ये पहले अपर स्टोरी में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1? 16.67। यू रेफर दिस फिगर, रेफर दिस वन। ओके, अभी Q1 ये वैल्यू है, जस्ट वहां पे वो वैल्यू पुट करो। ठीक है, तो Q1 है 16.67, Q1 is 16.67. ओके, व्हाट इज दिस वैल्यू? अभी ये Q1 16.67 है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन में ये कपल है यहाँ पर, तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में, तो नेचुरली ये राइट डायरेक्शन, सेम 16.67 कॉलम में। इसी तरह से फॉर एवरी कॉलम मेंबर यू जस्ट राइट डाउन दैट वैल्यू। तो यहाँ पे सेकेंड, दिस इज द इंटीरियर कॉलम, तो ये ट्वाइस Q1 है, ये ट्वाइस Q1, सो ट्वाइस Q1 इंटू 2 33.33, ये लेफ्ट ये राइट। ओके, अबव एंड बिलो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। फिर से दिस इज अगेन इंटीरियर कॉलम, दिस इज अगेन ट्वाइस Q1। ओके, दिस इज अगेन 33 पॉइंट अबव एंड बिलो पॉइंट, एंड दिस इज, ये फिर से एक्सटीरियर कॉलम है, दिस इज ओनली द वैल्यू ऑफ Q1 अबव एंड बिलो। तो ये अपर स्टोरी में अपन ने पूरे शेयर जो निकाले हैं वो शो कर दिए अबव एंड बिलो द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। सिमिलरली यू गो फॉर द लोअर स्टोरी कॉलम, पहले ये करना है, फिर से देन यू गो फॉर द लोअर स्टोरी कॉलम, एंड लोअर स्टोरी में ये जो है, दिस इज अगेन एक्सटीरियर कॉलम, दिस इज वेयर फाइंड आउट Q2 अपन ने निकाला, कितना नहीं मिला 41 पॉइंट से, फिर से अबव एंड बिलो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन Q2, देन Q2 यहाँ पे ट्वाइस Q2, दिस इज ट्वाइस Q2, तो Q2 इंटू 2 83.34, Q2 इंटू 2 83.34। ठीक है, above and below the point of contraflexion. Similarly, this is also twice Q2 and this is Q2. This is Q2. 41.67. 41. ठीक है, so this is Q2, that is 41.67 kilonewton. Okay, so this is Q2, this is twice Q2, this is twice Q2 and this is Q2. तो ये पूरे कॉलम शेयर
अपन ने अपर और लोअर स्टोरी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, अपर एंड लोअर स्टोरी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। यहां तक समझ में है? यहां तक समझ में आया? यस यस मैम। ओके, अभी क्या करना है अपने को? कॉलम शेयर अपन ने बता दिया अपर एंड लोअर स्टोरी में। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट एट द एंड ऑफ द कॉलम, मोमेंट एट द एंड ऑफ द कॉलम। तो विद हेल्प ऑफ दिस शेयर यू हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट एट दिस एंड, मोमेंट एट दिस एंड। ओके, तो दिस हाइट, ओके, तो क्या फॉर्मूला आपको यूज करना है यहाँ पे? मोमेंट एट द एंड ऑफ द कॉलम will be equal to column shear into height of the column by 2 into height of, why height of the column by 2? Because this is the location of the point of contraflexion. Okay, so अभी height of the column कितना है? 4 मीटर। ये जो height है कॉलम की, this is a 4 मीटर, ये 4 मीटर है। for every column the height is same. So height of the column divided by 2 into column shear. So what is the column shear? Column shear is 16.67 into 4 by 2, that is 2. तो कितना आ रहा है? 33.33. So ये कैसे जा रहा है? 16.67. If you rotate it like this, this is in the clockwise. So to resist this, जो end पे moment आएगा, that will be in the anti-clockwise direction. That will be in the anti-clockwise. So column पे जो moment रहेंगे, that all will be in the anti-clockwise direction. Okay, because this load is, lateral load is like this, shear developed in opposite to that. So this 16.67 into ये height है, total height of the column is 4, but this height up to this point of contraflexion it is 2. So 16.67 into 2 you'll get 33.33. This is in the clockwise direction. So यहाँ पे जो end पे moment आएगा, that will be anti-clockwise direction. Similarly यहाँ से 16.67 into 2, this is in the clockwise direction. This distance is 2. This is in the clockwise, so it will be in the anti-clock. तो column पे अपने को end moment आपको मिल रहा है, column में end moment आपको मिल रहा है, that is 33.33 due to this horizon. फॉर्मूला का कौन सा ध्यान में रखना है? कॉलम शेयर इनटू हाइट ऑफ कॉलम इनटू 2, हाइट ऑफ कॉलम इनटू 2. सो यू विल गेट द कॉलम मोमेंट एट द एंड ऑफ द कॉलम. सिमिलरली सेकेंड कॉलम में, इंटीरियर कॉलम में, यहाँ पे कॉलम शेयर कितना है? 33.33. सो 33.33 इनटू 2, ओके, एंटी क्लॉकवाइज एट बोथ द एंड, दैट इज 66.6. ओके, सिमिलरली सेम यहाँ पे आएगा 33.33 इंटू 2, एंड यहाँ पे सेम आएगा, Q1 है तो Q1 इंटू 2 दैट इज 16.67 इंटू 2 दैट इज 33 एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. ओके, तो ये अपन ने अपर स्टोरी में विद द हेल्प ऑफ दिस कॉलम शेयर वी हैव फाइंड आउट द कॉलम मोमेंट एट द एंड ऑफ द कॉलम, ओके, एंड विच इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन in all the columns. Okay, सिर्फ आपको करना है Q1 into height of the column by 2, height of the column by 2. Okay, you can find out the moment at end of the column for upper story. Similarly, find out the moment at the end of the column for lower story. For lower story. Now for lower story, the height of the column is, the lower story, the height of the column is 6 मीटर है, 6 मीटर हाइट है. ओके, जितनी हाइट है उतना आपको देखना है. अभी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल शेयर फॉर दिस एक्सटीरियर कॉलम इट इज 41.67. सो 41.67 into 3, 41.67 into 3, okay, you'll get 125. You'll get 125. So 41.67 into 3, you'll get 125. So that is again in the anti-clockwise direction. So this is, you can find out for exterior column and then for the interior column. Okay, so here you will get for exterior column, this is for the interior. सिर्फ डबल हो जाएगा, 125 है
यहाँ पे मोमेंट आएगा डबल ऑफ दैट इज 250, एंटी क्लॉकवाइज 250, एंटी क्लॉकवाइज 250. ओके, तो ये हो गया लोअर इंटीरियर कॉलम्स, दिस आर द लोअर एक्सटीरियर कॉलम. ओके, तो ओनली टू फाइंड आउट द कॉलम मोमेंट द फॉर्मूला विल बी कॉलम शेयर इनटू हाइट ऑफ द कॉलम डिवाइडेड बाय 2. तो आपको अपर लोअर स्टोरी में कॉलम मोमेंट्स मिल गए. इसी तरह से अगर और एक स्टोरी आपकी बढ़ रही है तो इसी तरह से कैलकुलेशन आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये हो गया अपर स्टोरी एंड लोअर स्टोरी कॉलम के मोमेंट्स अपन ने निकाले. अभी फ्रॉम द कॉलम मोमेंट, ये जो कॉलम मोमेंट है, सो फ्रॉम दिस कॉलम मोमेंट यू हैव टू कैलकुलेट द बीम मोमेंट. फ्रॉम द कॉलम मोमेंट यू हैव टू कैलकुलेट द beam moment. Okay, so beam moment for upper and the lower story. So I'll get the beam moment. How will get the beam moment? Again you have to calculate, or you have to go for the calculation from top corner joint to right joint. पहले upper का फिर लोअर का कैलकुलेशन करेंगे. ओके, तो यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है. ओके, तो ये कैसे कैलकुलेट करना है? ओके, यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर. जैसे यहाँ पे सी हियर, यहाँ पे दिस इज 33.33 एंटी क्लॉकवाइज. ओके, दिस इज 33.33 एंटी क्लॉकवाइज. दिस 33.33 एंटी क्लॉकवाइज. तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा. ओके, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा. यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो जैसे ये कॉर्नर जॉइंट है, इसका इक्विलिब्रियम आपको मेंटेन करना है. ओके, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज 33.33 है, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे कितना आएगा? दिस इज क्लॉकवाइज 33.33. यू हैव टू मेंटेन द equilibrium of the joint. You have to maintain the equilibrium of the joint. So this is the clockwise. तो यहाँ पे मोमेंट कितना आएगा? यहाँ पे मोमेंट जो आएगा ये क्लॉकवाइज है. ओके, तो इक्विलिब्रियम ऑफ द जॉइंट शुड बी सेटिस्फाइड, यानी यहाँ पे मोमेंट की जो एडिशन रहेगी वो जीरो आनी चाहिए. तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे मोमेंट जो रहेगा क्लॉकवाइज रहेगा. ये क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, सो दैट द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस जॉइंट should be satisfied. Now this is anti-clockwise moment. This is anti-clockwise moment. What is the moment developed here? This is a clockwise moment. This is clockwise moment. तो ये आपका बीम है. This is a beam. अपने को बीम मोमेंट निकालने, इसीलिए पहले अपन ने कॉर्नर जॉइंट पे मोमेंट निकाल दिया. ओके, कॉर्नर जॉइंट पे मोमेंट विद हेल्प ऑफ व्हाट? कॉलम मोमेंट. तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, सेम मोमेंट रहेगा. दिस इज क्लॉकवाइज, so this will become anti-clockwise. So the equilibrium of this joint C should be satisfied. So this is anti-clockwise, this will be clockwise moment, this will be clockwise moment. Now this is again we are finding out the beam moment at the end of the beam. Okay, so this end में moment आपको 33.33 मिला. So what about this end? This is I have already shown here, but this is a clockwise moment. I have shown it here also, the clockwise moment. Why? Why this moment here it is clockwise and this is also clockwise moment? Yes? Can anyone tell me? बीम मोमेंट पे ये एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट आया, यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट आया. सो व्हाट अबाउट दिस मोमेंट हियर? द सेम मोमेंट रहेगा, सेम मोमेंट रहेगा 33.33. आई हैव शोन इट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. व्हाई हैव शोन इट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन? Any one of you?
Why I have shown it in the clockwise direction? जैसे कॉलम पे आपको एवरी मोमेंट एट द एंड ऑफ द कॉलम एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है. यस, एनी वन ऑफ यू. कौन बात कर रहा है? निशांत. Okay, I will stop here because it is 11:30. So I'll stop here. I will explain this. I will explain this in the next class. Okay, and then I will finish this problem. I will ask this question you in the tomorrow's class. Why this I have shown in the clockwise direction? Okay. I have uploaded the quiz for the attendance. You just attempt that quiz and then wait a minute. Don't leave the class. Okay. Tomorrow only I am having only one class. Okay. And after that again I have to finish one method, cantilever method. Okay. So for that I need to take one extra class.